हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल शन एंड शन रिएक्शन। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। तो हमारी दुआ है हंसते रहे, बसते रहे, मुस्कुराते रहें और अपनी अपनी जिंदगियों में खुश रहें। तो आज इस वीडियो पे हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं। जो आप लोगों को पता है, हम जो भी वीडियो बनाते हैं ज्यादातर हमारी रिक्वेस्टें आई होती है प्यारे से व्यूवर्स की। तो आज भी जो वीडियो हम रिएक्ट करेंगे उस पर भी हमें प्यारी सी रिक्वेस्ट आई है। तो जिनकी रिक्वेस्ट आई है, फर्स्ट टाइम आई है जी, तो उन्होंने बहुत प्यारी सी 2 रिक्वेस्टें की हैं। तो हम फिलहाल एक रिक्वेस्ट उनकी पूरी करने जा रहे हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नए हैं तो अब भी कर दें। जिन्होंने पुराने लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों अपने पास रख के बैठे हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। आप लोग देख लेते हैं और भाग जाते हैं हमारी वीडियो देख के, लाइक बिल्कुल नहीं करते, और कमेंट्स भी लाजमी किया करें। तो वीडियो जो है उसका टाइटल भी आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं। पहले तो हम प्यारा सा जो मैसेज आया है वो पढ़ के सुनाते हैं। तो शान पढ़ के सुनाए इनका जो पहला मैसेज है। जी, ये हमारे भैया हैं, अजिंक्य याग करके नाम है इनका कुछ। तो इन्होंने कहा है जी, कंपनी सीईओज फ्रॉम इंडिया ओरिजिन पे वीडियो करो और यूपीआई सिस्टम इन इंडिया एट स्मॉल बिजनेस पे वीडियो रिएक्शन करो। तो सेकंड वाला जो है यूपीआई सिस्टम उस पे और हम स्मॉल बाद में बिजनेस, देंगे। इसको तो हम बाद में बात कर ही रखते हैं। फिलहाल जो है, जो इन्होंने सीईओज का बताया है वो मैं भी हैरान हूँ, बल्कि हम भी हैरान है। पाकिस्तान में अक्सर बात करते रहते हैं इस पे कि हर बड़ी कंपनी का सीईओ इंडिया से होता है। इसकी क्या वजह है, क्यों भाई, क्या बात है? तो थैंक यू सो मच अजिंक्य याग भैया, आपने अच्छा वीडियो का बताया हमें कि इस पे आप रिएक्शन दो या वीडियो बनाओ, तो हमें भी जरा पता लगेगा। तो इसका वीडियो का जो टाइटल है वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुना दूंगी, वाई सो मैनी सीईओज आर फ्रॉम इंडिया। तो ये तो सवाल बनता है जी, हमारी तरफ से भी बनता है, और आप लोगों में से कई सोचते होंगे यार क्यों, ऐसा क्यों है। तो ये आज हम सारे मिलके देखते हैं ऐसा क्यों है। तो चलें वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं और देते हैं अपना रिएक्शन। Google, Adobe, Microsoft, and IBM are all run by people who grew up in India. The latest to join these ranks is Twitter CEO Parag Agrawal, who took over from Jack Dorsey. People originally from India make up 1% of the total US population, yet about 6% of Silicon Valley's workforce. So, why are there so many tech CEOs who hail from India? When Satya Nadella took over as CEO of Microsoft in 2014, the company was in bad shape. Bill Gates was reportedly an angry and difficult boss. His successor, Steve Ballmer, apparently wasn't any better. Microsoft was also a dinosaur. It had failed to innovate. For example, it lost the smartphone battle to Apple. Along comes Nadella, an engineer who rose through the ranks of Microsoft to become the CEO. Nadella changed the culture of the company. He made it clear anger and yelling weren't welcome. He also sought to make Microsoft relevant. We now need to make Microsoft thrive in a mobile-first and a cloud-first world. Under his direction, Microsoft moved its software to non-Windows devices and expanded its cloud business, Azure. That innovative spirit of problem-solving was bred in his native country. India is home to nearly 1.4 billion people. It's the second most populous country on Earth after China, and is expected to overtake China as the most populous country in a few years. Although India has made remarkable progress, poverty is still a major challenge. Nearly a quarter of the population lives below the poverty line of $1.90 a day, according to the United Nations Development Program. They face corruption, poor infrastructure, and limited opportunities. So they learn to be resilient, adapt, and overcome endless obstacles. This leads them to be problem solvers, a key asset in any corporation. Sundar Pichai has had to solve many problems after taking over at the helm of Google in 2015, at a time when big tech is being scrutinized over the power they hold. He became the archetype of a kinder, calmer, gentler leader in tech. Pichai earned an engineering degree at one of the Indian Institutes of Technology. The IITs are kind of like the Indian equivalent of MIT, with an even lower acceptance rate, reportedly of 1 or 2%. After Pichai graduated, his ticket to America came in the form of a master's at Stanford. Going to a top grad school in the States is how many Indians land up in the land of opportunity. They appear to follow this well-trodden path. They did their undergrad at a great school in India, got a master's in the US, where they studied STEM, science, technology, engineering, and mathematics. More than half of all international students in America pursued a STEM degree in the past academic year. American immigration favors people with specialized skills.
After Pachai graduated, he went on an H-1B visa to work at consulting firm McKinsey. The H-1B allows American companies to employ foreign workers, many of whom are in IT-related fields. The U.S. government awarded nearly 75% of these visas to Indians in 2020. In comparison, China trailed far behind in second, at 12%. The fact that so many Indians can speak English is a tremendous advantage in the West, and they're comfortable with American business culture, possibly because it mirrors the thriving IT industry back home in Bangalore, Chennai, and Hyderabad. They're also more likely to want to work overseas. 80% of Chinese international students return to China after graduating, according to China's Ministry of Education. Chinese entrepreneurs prefer starting their own companies at home. Alibaba is known as the Amazon of China. Tencent owns the messaging app WeChat, used by 1.2 billion people. Huawei is one of the giants of the tech industry. China's transition from a manufacturing hub to a tech hotbed has largely been driven by government policy. In the late 70s, Chinese leader Deng Xiaoping encouraged foreign businesses to set up offices in China, which fostered a startup environment. On the other hand, India has a problem of too much talent leaving the country for good. It has the highest number of migrants living abroad, at 17.5 million, according to the UN. And more Indians gave up their passports to become naturalized American citizens in 2020 than the Chinese, continuing the trend from past years. However, the brain drain from India may be starting to recede. An increasing number of homegrown Indian startups are becoming unicorns, meaning the companies are valued at 1 billion or more. The data platform Traction tells Newsthink India created 47 unicorns in 2021, a significant jump from the 17 in 2020, and even less in years past. The tech ecosystem is being bolstered by powerful investment firms such as SoftBank that have been pumping money into Indian startups. But in order to entice more people to remain in their native country, salaries will have to catch up with those in the West. The average American tech worker earns around $98,000 a year, according to the online recruiting platform Dice. Tech salaries in India vary greatly, but the job site Indeed pegs the median salary at $20,000 US, going up to as much as $33,000, which makes them some of the top earners in their country, but still, far less than what they'd make in the States. As salaries grow along with India's startup boom, this could have implications for the number of exceptional individuals desiring to move abroad. The one thing that the CEOs of tech giants have in common is their strong background in engineering. If you wanted to improve your STEM skills, my sponsor Brilliant can help you achieve your goals. Brilliant is a website and app that lets you tackle math, science, and computer science concepts in a fun and hands-on way. You can develop your critical thinking skills through their recently updated logic course that forms the basis for mathematical reasoning. Or you can jump right into their popular mathematical fundamentals course to master algebra, logic, and number theory. There's something for everyone, whether it's the foundations of computer science or learning about cryptocurrency. If you're stuck on a question or get an incorrect answer, you can read the explanation to see where you went wrong. Brilliant is free to sign up if you head to the custom link in my description, brilliant.org/newsthink. And the first 200 of you to sign up with my link will receive 20% off Brilliant's annual premium subscription, which unlocks all of the courses. Thanks for watching. For Newsthink, I'm Cindy Palm. लेकिन जी बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी और ज़बरदस्त थी। इसमें बताया गया है गूगल, अडोबी, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के सारे सीईओ जो हैं वो इंडिया से हैं और बहुत से इंडियंस हैं जो रह रहे हैं अमेरिका में, बाहर दूसरी कंट्रीज वगैरह में। और इंडिया का बताया गया कि वहाँ पे करप्शन भी है और बहुत से मामलात जो ख़राब हैं इंडिया में, और पाकिस्तान में तो बहुत ही ज़्यादा है ना, लेकिन इंडिया में भी कुछ हैं। तो फिर कुछ जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो भाई इंडिया छोड़ देते हैं, फिर वो आगे चले जाते हैं यूएस वगैरह में, वहाँ पढ़ते हैं, वहीं उनको फिर आगे ऑफर्स वगैरह होती हैं जॉब्स वगैरह की, वहीं वो स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, इंफॉर्मेटिव थी और मज़ा आया। और ब्रेन कहते इतनी बड़ी आबादी है तो फिर सारी बात है, उनमें फिर ब्रेन भी ऐसे होते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है, बिल्कुल होते हैं, ऐसी चीजों के लिए फिर ब्रेन भी तो फिर चाहिए। नेक्स्ट फिर ऐसे तो नहीं है कि सिफारिश करके लाग गए जी पाकिस्तान में, रिश्वत दे के लाग गए, ऐसे नहीं होता। एजुकेशन है जी, एजुकेशन जितनी अच्छी मजबूत होगी ना, बस। तो बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी और
खुशी हुई देख के कि इतने इंडियंस हैं जो सीईओ हैं सीईओ हैं कंपनीज के इतने बारे में ज्यादा। बात अब देख लो, हम जो गूगल है, 1 मिनट में गूगल खोल लेते हैं, कुछ भी हमने देखना है, कुछ भी सर्च फेसबुक देख करना लो, है, ट्विटर देख लो, तुम क्या ये कुछ देख है। लो, ये भी हमारे रोजमर्रा जैसे जिंदगी के होते हैं ना, खाने पीने वाली ट्विटर का चीजें। जो सीईओ है हाँ, वो भी वहां से है, अपना इंडिया का है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। वो आईबीएम वगैरह हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, सबसे सारा ज्यादा कुछ है। इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं और इतनी अच्छी, और मैं कहती हूँ कि यूजफुल है ना। और उसके सीईओ अब हमारे ज़हनों में पता चल गया जी कि इन सब चीजों का जो सीईओ है वो इंडिया से है जी। बिल्कुल। इंडिया में हम वैसे पहले ही बात करते होते हैं कि जो ज्यादा तलीम, ज्यादा अच्छे पढ़े लिखे और एजुकेटेड जो लोग हैं ना, वो सारे इंडिया में हैं। बड़े से बड़ा जो भी देख लो ना, इंडिया में बताते हैं कि इंडिया में है। हमारे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है जी। यहाँ पे इतनी एजुकेशन अब अच्छी नहीं है ना, लोग इस तरफ आते नहीं है, बस अपनी जिंदगियों में मगन है। और ये जो है अब सीईओ जो हैं, ये हाँ भी जी। सारे इंडिया छोड़ के ही गए हैं खैर से। हाँ। ये अमेरिका वगैरह वहां यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, वहां पे जाके फिर ये जिनके बहुत ज्यादा शार्प होते हैं माइंड वगैरह, वो फिर हाँ। बहुत आगे निकल जाते हैं, वो सीईओ तक पहुंच जाते हैं ऐसे ही है। कंपनीज वगैरह में। और ये ऐसे नहीं होता कि एकदम ही उठा के सीईओ ऐसे बना नहीं दिया, होता। नहीं, पहले बड़ा छोटी कुछ जगह पे स्ट्रगल जाते हैं, फिर करना वहां पे पड़ता है। स्ट्रगल करते हैं, अपने काम करते हैं, उन्हें दिखाते हैं करके, वो फिर आस्ता आस्ता आगे से आगे जाते जाते वो एक दिन सीईओ तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही बहुत बड़ी ऐसे ही बात है बहुत इंडिया के बड़ी लिए, बात है। प्राइड मोमेंट है कि उनके देखने कितने बड़े हैं, ये पूरी दुनिया में इनका नाम है। ट्विटर हो गया, और कितनी आईबीएम हो खुशी गया, होती होगी माइक्रोसॉफ्ट, जब ऐसे नाम लिया जाता है, ये सीईओ है, ये हमारा इंडिया से है। इंडिया से है जी, पूरी दुनिया में नाम सर होता है। फखर से उठता हुआ है, वाह जी, ये हमारे इंडिया से है। अच्छी बात है, बहुत मजे की वीडियो थी। और जिन्होंने मैसेज किया, थैंक यू सो मच। हमने इतनी अच्छी वीडियो के बारे में हमें बताया ना कि हमने कभी सोचा भी नहीं था, और ना हमें इस बारे में पता था। और हमारी तरह और भी लोग होंगे, हमारे पाकिस्तान में भी बहुत लोग होंगे, और इंडिया में भी इंडिया काफी में भी लोग होंगे होंगे जिनको नहीं जिनका पता ये होगा। सवाल होगा। हाँ बिल्कुल। अब ये हमारी वीडियो देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा जी सीईओ कौन किसका था और कैसे बना, और कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल करके कहां से कहां पहुंचे जी। तो चले वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आप लोगों ने कमेंट्स करके लाजमी बताना आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी, और वीडियो पे किया रिएक्ट कैसा लगा, और प्यार प्यारे कमेंट्स कर देना, और हमें बताना कि हमारा जो अगला रिएक्ट हो वो किस पे हो, और हमें रखें दुआ में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, ओके बाय जी, बाय बाय। बाय।